सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान बाएतमाद नुमाइंदों की टीम के साथ जियो का मसरूफ प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान, सबसे पहले और सबसे आगे। Safir Pakistan actively works to strengthen the bond between Pakistani Americans across the nation. I really appreciate Waqar Ali Khan who carries this process very well indeed. पल पल की खबरें और कम्युनिटी राब्तों के साथ लगातार उभरते और कामयाब व कामरान लोगों की दास्तान आप तक पहुंचाने में सबसे पहले सबसे आगे। Putting up a great program, running an excellent platform for bringing like minds together. Congratulations for putting a great program together, and thank you for connecting so many Pakistanis from all over America to each other. हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपके मेज़बान वक़ार अली ख़ान OPTV ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत है और आप देख रहे हैं आपका मशहूर प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान। कैसे मिजाज हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और पाबंदी से हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे। और हाँ, याद रखिए, इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। डेफिनेटली टेक ए कप ऑफ टी और कॉफ़ी एंड देन सब्सक्राइब द OPTV ग्लोबल, ओके। और याद रखिए, देखने से पहले और जाने के बाद सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान वक़ार अली ख़ान के साथ। नाज़रीन, जैसा जानते हैं कि लॉस एंजलिस एक बहुत ही मसरूफ़ तरीन शहर है और यहाँ पे पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद आबाद है जो गुनगु मुख्तलिफ़ इवेंट तक़रीबात मनाते रहते हैं और पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज को बिल्ड करते हैं। नाज़रीन, इस साल भी हर साल की तरह HDF ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन ने एक फंड रेजिंग का एहतमाम किया, जिसकी रूह रवां हैं डॉक्टर यास्मीन फ़िरोज़ कासिम, जो कि अरसे दराज से ये फंड रेज करती चली आ रही हैं और वो अब अपना चैप्टर की भी प्रेसिडेंट हैं और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनका मेल जोल रहता है। इस साल शेरेटन होटल ब्रुकहर्स्ट के अंदर एक शानदार और ख़ूबसूरत तकरीब हुई, जिसमें आसिम अली ख़ान साहब जो थे वो द की नोट स्पीकर। उन्होंने पाकिस्तान में जो ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन है उसकी हिस्ट्री पे रोशनी डाली। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। For 3 years. Previously, he also served as director in the President's Secretariat, Islamabad, and in other various capacities. Mr. Asim Ali Khan has a master's degree in international relations and a bachelor's in mechanical engineering with honors from Pakistan. In recognition of his extraordinary meritorious public service, the President of Pakistan conferred the Civil Award of Sitara-e-Imtiaz on Mr. Asim Ali Khan on Pakistan Day 2023. Please welcome Mr. Asim Ali Khan to come and say something about HDF. Dr. Yasmen Awsrd, honorable members of Pakistani American community, Assalamu alaikum and good evening. Congressman has left, but I want to echo what he said. He said most of the things what I wanted to say. Just emphasize a few things. The other day I was discussing with a member of our community that there have been so many fundraisers in Los Angeles. So what's going on? There were different explanations by my friend, but what I have seen in last 8 months since I have landed in Los Angeles, that this community is very special and very unique. I would be very candid today that despite your reservations and your questions about Pakistan's situation back home,
we have not stopped helping and supporting the people of Pakistan. This is something I really want to appreciate. This community in Los Angeles that believes in giving, and you have done it, and you have shown and demonstrated it through your actions. I've been attending so many fundraisers since I came here, and I've seen that people have not given up on Pakistan. People have not given up on the future of Pakistan. This is something which is very unique and very precious about you. And really admire and appreciate that. I want to share with you a few things which some of you might know. That this concept of human development, this is at the heart of national developments nowadays. But one very important thing in which Pakistan takes pride in, that this concept, how this human development is quantified and measured, was introduced at the international level by a Pakistani economist. Some of you might have heard the name of Dr. Mehboob Haq, who was also finance minister of Pakistan in the late 1980s. This was Dr. Mehboob Haq, the chief economist. He served in the World Bank and other international financial institutions, and also twice as finance minister of Pakistan. This was Dr. Mehboob Haq who coined this Human Development Index, which now all international agencies, including the World Bank and IMF, are using to measure how developed a country is. So it's this HDI, Human Development Index, when Dr. Mehboob Haq coined this, it was adopted by the United Nations and other international agencies, and now it is worldwide use. So the concept of human development came from, in quantifiable form, from Pakistan, but unfortunately we fall far behind in the Human Development Index at international level. The government spends almost 4% of GDP of Pakistan on human development, but the good thing, as I said earlier, about the people of Pakistan, in which you have a major contribution, that total 8% of the GDP of Pakistan is now spent on human development, which still is far, far less than what the actual requirement is. The time is very short. I cannot go into details of what has happened over the last 75 years in the area of human development, but a few statistics you should know, so that you should not lose heart about the facts where we stand today. Pakistan is often compared with India, one country which is in a neighborhood which is 7 times bigger than Pakistan, 7 times, 8 times population. In the last decade, the economy of India has gone far ahead of Pakistan, but the per capita GDP of India is not much ahead of Pakistan. Its total GDP is much bigger than Pakistan because of its size and economic policies over the last decade, but the per capita GDP in nominal terms is only a few $100 per capita more than per capita GDP of average Pakistani. This is just one measure of human development when Dr. Mehboob Haq coined this Human Development Index, HDI, on which Pakistan unfortunately is not, and same other South Asian countries. So coming back to your contribution, just wanted to thank you that you are giving back to Pakistan in a big way, continuously, despite the issues and the facts which I know most of you don't like, especially in political and economic domain, but I just want to thank you on behalf of the Consulate General of Pakistan, on behalf of the government of Pakistan and people of Pakistan, for your love and patriotism that you are showing by your actions, not merely by words. And this is happening. And about Human Development Foundation, I have been in touch with Human Development, HDF, and I was in Washington, D.C. a couple of years ago. I've seen its different chapters working in such an organized manner that HDF has become a hallmark, and HDF has become one of the most credible organizations which is working in Pakistan. And the numbers we have seen in areas in the health and education sector, in community development, and in other sectors, for example, in water projects, numbers are remarkable. That shows that the money is being spent where it is required. And your contributions to the human development in various areas, in health, education, would go a long way, I'm sure. I would just narrate a small personal incident before I close my talk today. I got my first degree from the University of Engineering and Technology, Lahore. At that time, we were very young students. Alhamdulillah, we were blessed, but we studied in Engineering University, and all of you who have studied from Pakistan, from medical schools, from different universities, in public universities, would know that
rather would corroborate the fact that we almost study free of cost. We almost study free of cost, and that is something unique that in a country which is poor, it's spending so much for the higher education, and this is a moral obligation. I feel there's a moral obligation on us also. Dr. Yasmin, you rightly said that charity does not decrease the wealth. This is something, it's a matter of faith also, it's a matter of national obligation, it's a matter of moral obligation, it is a matter of love and patriotism that all of you are demonstrating, and I want to thank you very much from the core of my heart. So I'll encourage you to continue to do this good job and good work. Thank you. नाज़रीन, इसके अलावा मारूफ स्कॉलर, डॉक्टर्स, PhD जनाब डॉक्टर सना खान ने भी इस तकरीर से ख़िताब किया, लेकिन इनका ख़िताब मौजूद था पहले सीजन में होने वाला जुल्म। तो फिर उन्होंने बेलाग तबसरा किया, बहुत सारी बातें की, और उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन के बारे में कहा कि एक अच्छा अदारा है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और साल साल से काम कर रहा है, और मैं हमेशा इनके साथ रहता हूँ और आइंदा भी रहूँगा। ये देखते हैं कि ये क्या कहते हैं इस मौके पर। Please welcome Dr. Sana Khan. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Much better. Just alhamdulillah, everybody has come up here, has spoken regarding generosity, charity, and the goals of HDF. And mashallah, I think all of you here know the goals and what needs to be done. And inshallah, open up your checkbooks, open your hearts, open your wallets. But sometimes, we say something's called as an elephant in the room, which means there's something going on, it's very obvious, and yet we are not necessarily talking about it. So I want to talk, if you don't mind, Dr. Yasmin, really, and Asim, good to see you as always. I actually want to talk about Palestine, if it's okay with you guys. Yes. But before you clap, I may end up saying things today or tonight here with you, and I don't mean to offend anybody at all. So please forgive me if I offend you, that's not my intent. But whenever something happens in life, and I think it's not just about Palestine, but anything happens in life, you always have to look first and foremost. Yes, Yasmin, मैं आपको ये बताऊं, when I speak about Palestine, it is about charity. And charity is, this whole week has been a very heavy week for us. But I want to shed you some light on it, because inshallah, honestly, everybody here, you better have known about HDF, that's why you're here. Right? But I'm going to tell you a story. I want to tell you a story of the Prophet ﷺ. In ज़मानों में, because every time something happens. नाज़रीन, इसके अलावा आपको पता है कि कम्युनिटी में लोग बहुत बढ़ चढ़ कर काम करते हैं, हिस्सा लेते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, चंदे मांगते हैं, हाल को आगे सजाते हैं, प्रमोट करते हैं। उससे में कुछ लोगों को इस बार अवार्ड से भी नवाजा गया। इसमें पहला अवार्ड फातिमा खान को दिया गया, जो अरसे दराज से कम्युनिटी से मुंसलिक हैं और पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वाइस प्रेसिडेंट है। कोविड टास्क फोर्स की भी ये रही हैं सरगर्म कारकुन। इसके अलावा ग्रैंड अलायंस और पाकिस्तान की जनरल सेक्रेटरी भी हैं और HDF के लिए काफ़ी अर्से काम करती रही हैं। तो उनकी जो एक्टिविटी है और जो उनका कंट्रीब्यूशन है कम्युनिटी में, उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया इस बार, और HDF की जाने से उनको भी एक अवार्ड से नवाजा गया। आइए देखते हैं।
Very nice to be finally remembered. No, just kidding. It was a pleasure working with HDF and doing whatever I could. And I am so glad that you guys are continuing this, all the organization. I know we're suffering a big donor fatigue, inflation, where 2024 COLA was only 3.2, where compared to 2023 at 10%, and so many people are fighting, trying to make the ends meet. But you guys are all still here, making a difference in the life of those who really need you. So congratulations, Yasmin and Abda Daraksha, and thanks again for this award. फातिमा खान के अलावा उनकी बेहतरीन दोस्त आबदा अहमद, जो अरसे दराज से इस कम्युनिटी में आबाद हैं, और कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिनमें उनका हिस्सा नहीं है। वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सरगर्म है और बड़ी मेहनत से, लगन से काम करती हैं। इफ़ एनीबडी नीड हेल्प, आबदा इज़ अ वन कॉल अवे। और उनको भी इस बार रिकगनाइज किया गया और अवार्ड से नवाजा गया। आइए देखते हैं कि आबदा इस मौके पर क्या कहना चाहती हैं। Thank you, Yasmin, and thank you all of you. Without you, we cannot do all these events, Thank you. नादिन, इसके अलावा ऑफ कोर्स वो लोग जो इस बैंकेट को सपोर्ट करते हैं, फंडिंग सपोर्ट करते हैं, उसमें एक नाम, बहुत अहम तरीन नाम है प्रेसिडेंट पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड रीजनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वालेस बैंक। उनको भी आला कारकर्दगी पे अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा हबीब बैंक, मेरा बैंक, मेरा भी तो है, हबीब अमेरिकन बैंक, जिसको अब हब बैंक कहते हैं, वो अरसे दराज से मसरूफ़ कार है और उसने पाकिस्तान टेलीविज़न सफ़ीर पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। और इस मौके पे उनके मैनेजर जनाब असद को भी अवार्ड से नवाजा गया। आइए देखते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। The work the HDF is doing is commendable. You guys are making a difference in people's lives. So any support we can do, we should support and support our people. Like when we are the chosen one by Allah, we are here sitting in this room, so we should support as much as we can. Thank you. इस मौके पे डेफिनेटली शाहनवाज के खानों से तवाज़ी की गई और नहायत ही खूबसूरत और शानदार महफिल मौसीकी भी सजाई गई। आइए देखते हैं महफिल मौसीकी की कुछ हाईलाइट। नाज़रीन, तो आप देख रहे थे प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान और खुसूसी नशरियात ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन की, HDF की, अगेन जिसकी रूह रवा डॉक्टर यास्मीन है, जो हर साल ये प्रोग्राम करती हैं। लगता है कि डोनेशन अच्छा जमा हो गया है और इसी तरह से वो खिदमत अंजाम देती रहेंगी। इसके साथ ही आपका मेज़बान वकील खान आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।
अरशाद बारी ताला है, हम कुरान में उतारते हैं वो चीज़ जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। जब कोई मुसलमान किसी मुश्किल में होता है और ज़िंदगी के अहम फैसले करना चाहे तो उसे चाहिए इस्तिखारे की रहनुमाई हासिल करे। संत की शादी, वीज़े में रुकावट, औलाद का नाफरमान होना, शौहर की बेवफाई, तलाक के मसाइल, इन तमाम मसाइल की रहनुमाई के लिए राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान, आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड आल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7. OPTV की फखरिया पेशकश, दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।